So welcome to the course. We are doing BEGC 103, right? We are beginning this course. This is our very first lecture. Before this, I have given you an introductory lecture where I've talked about the different units and the different blocks in which this course is divided, right? And today we are going to begin this course. This is Unit 1, and it is called the Indian English Novel, right? So before I begin and tell you all about the Indian English novel, and before I begin this course, I would like to tell you a few things, right, about the Indian English literature, so to say. So just as we begin, uh, the first thing that you need to remember through this course is that English is a language that we got from the colonizers, right? It is the colonizers' language. But you have to understand that because of the constant interaction, because of the constant engagement, ये जो हमारे देश में 1857 से लेके 1947 तक almost 100 years, the British were there as the rulers almost, right? Not 1857, began from almost 1757 rather, right? The Battle of Plassey. So Britishers have been there in a ruling authority in India since then. तो ये 200 साल के इतिहास में जो इंग्लिश की जो वैल्यू है वो काफी आगे गई, मतलब there has been an interaction where the value of English has been constantly uplifted. And because there has been a constant engagement with the language, English has also become a part of the language, right? More than that, because आज जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं, इट इज अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, इट इज अ ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी वेयर द कल्चर्स ऑफ द वर्ल्ड in essence can be found everywhere, right? You can find the culture of New York, let's say, be it the fooding style, be it the dressing style, be it the language, right? In India, in the metropolitans these days, right? So there has been a constant intermingling of culture, and there has been a constant uniform, culture को एक यूनिफॉर्मिटी जिसको कहते हैं वो दी गई है. हर जगह एक सिमिलर कल्चर ग्रो हो रहा है, राइट? एंड at the base of all of this is English also, right? So English becomes important to Indian English literature in that sense. Now, let's move into this lecture, and here we will talk more about the different authors and the different segments of the Indian English novel that we have seen through the years, right? So let's get into this. So in this lecture, first I'll give you an introduction, right? I talked a little bit about the importance of English, और मैंने दो reasons बताए mainly, जहाँ पे एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि English is the language of our colonizers, right? And because it was for a 200-year span that they were ruling us, तो इंग्लिश ऐसा ही नहीं रहा कि बस कॉलोनाइजर्स की ही भाषा बन के रह गई. एक तरीके से हमने भी उस भाषा को अपना लिया, और उसके बाद नॉट जस्ट use the British English, but if you see, and we'll see here in the post-independence novelists, कि कैसे इंग्लिश को हमने अपनी भाषा की तरह अपना के उसको यूज किया, राइट? पीपल लाइक सलमान रश्दी, right? They were using English as their own language. People like Arundhati Roy, right? You will see this as we get to the novelists in the later stage also. So this was happening, and also because of the globalized uniformity in languages, in culture, English has become a language that can be used to communicate in different regions, and the value of English has thus increased, right? So we'll be talking more about that. I'll give you an introduction. Then we will talk about the first Indian English novel, right? कि सबसे पहली अंग्रेजी में लिखी गई इंडियन इंग्लिश नॉवल कौन सी थी, हम उसकी बात करेंगे. फिर थ्री सिग्निफिकेंट नॉवलिस्ट्स जो हमारे हैं,
बाय द नेम मुल्कराज आनंद, आर के नारायण और राजा राव, हम इन तीनों की बात करेंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस नॉवलिस्ट्स की बात करेंगे कि जो इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के बाद जो प्रोमिनेंस में आए, या फिर जो जिनका बर्थ ही 1947 या फिर 1947 के बाद हुआ, उनकी हम बात करेंगे आगे। और फिर हम कुछ विमेन नॉवलिस्ट्स की भी बात करेंगे। सो ऑल्दो आई डोंट अग्री इन कीपिंग द विमेन नॉवलिस्ट्स डिफरेंटली, क्योंकि आई थिंक दे कैन गो at pace along with all the novelists in their own time. But okay, they have placed it differently, and we are going to read it like that, right? And finally, to ponder upon, we are going to look into a few questions. Okay, now before I begin this lecture, let me tell you, इस lecture में मैं बहुत सारे texts की बात करूंगा। जिन भी ऑथर्स के बारे में हम बात करेंगे, उनके मेजर टेक्स्ट्स की भी हम बात करेंगे, मेजर नॉवेल्स की हम बात करेंगे। तो इतने सारे नॉवेल्स को देख के आप ओवरवेलम मत होइए, आप घबराइए मत। जस्ट ट्राई टू नो अ लिटिल बिट अबाउट दीज नॉवेल्स, क्योंकि अगर आप आगे जाके इंग्लिश लिटरेचर को किसी भी तरीके से परस्यू करेंगे, तो ये जो नाम है, अगर आप एक बार सुन के भी रखते हैं, तो इट्स जस्ट इवन नोइंग दैट ओके दिस काइंड ऑफ अ टेक्स्ट हैज बीन रिटन बाय सो एंड सो नॉवेलिस्ट और सो एंड सो ऑथर इज गोइंग टू हेल्प यू इन द फ्यूचर, राइट? तो आप सारे नॉवेलिस्ट, सारे नॉवेल्स को आपको जानना जरूरी भी नहीं है, मैं कुछ कुछ के बारे में आपको ऑलरेडी बताऊंगा, राइट? बट आप, ताकि वो सारे नाम देख सको, इसलिए मैंने उनको पीपीटी में डाला हुआ है, राइट? सो डोंट गेट अफ्रेड और डोंट गेट ओवरवेल्म्ड बाय इट, आप उससे घबराइएगा नहीं। सो ऑन दैट नोट, लेट्स गेट इनटू द इंट्रोडक्शन। इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस्ड इन द अर्ली 19th सेंचुरी, राइट? सो अर्ली 19th सेंचुरी मतलब 1800s में इंग्लिश एजुकेशन जो है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई, राइट? 1835 में आई गेस लॉर्ड मकॉले जो थे, उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन और साइंटिफिक ऐसे जो वेस्टर्न एजुकेशन थी उसको काफी ज्यादा प्रोमिनेंट बनाया इन इंडिया, राइट? सो विच लेज द फाउंडेशन फॉर द इंग्लिश दैट वी गेट लेटर ऑन, राइट? तो इंग्लिश एजुकेशन उस तरीके से इंपॉर्टेंट हो गई, एंड ऑब्वियसली ये कॉलोनियल रीजंस के लिए किया गया था, ताकि अपने मास्टर्स, सो टू से एट द टाइम कॉलोनाइजर्स से हम कम्युनिकेट कर सके, या फिर उनकी भाषा सीख सके, या फिर उनके तरह सोचना सीख सके एक तरीके से। इट वाज आल्सो एन अटेम्प्ट टू सिविलाइज द ओरिएंट, राइट? टू सिविलाइज द अनसिविलाइज्ड इंडियंस, इट वाज एन अटेम्प्ट टू डू दैट। So, and this was the reason why English in India began. The essays, articles, and sketches soon began to flow from Indian pens, right? So, 1779 में हम इधर देखेंगे Hickey's Bengal Gazette. This was the first Indian newspaper in English. Hickey's Bengal Gazette 1779 में ये सबसे पहली अंग्रेजी भाषा में लिखी गई प्रेस प्रिंट होती हुई न्यूज़पेपर in India, right? Early Indian English novel was influenced by the Trinity. Now, सबसे पहले इंडियन इंग्लिश में जो Deen Muhammad wrote his travelogues. He was the first person to write in English, right? Deen Muhammad. He wrote his travelogues, and that was early. I guess it was in the 1700s, only late 1700s that he wrote that. But it was not a novel, right? It was not a novel. जो सबसे पहली इंडियन इंग्लिश नॉवल लिखी गई वो है राजमोहन वाइफ। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इट इन द नेक्स्ट स्लाइड एज वेल। राजमोहन वाइफ बाय बंकिम चंद्र, राइट? लेकिन अभी इस टाइम पे प्रोमिनेंस में नहीं था इंडियन इंग्लिश नॉवल। द प्रोमिनेंस दैट इंडियन इंग्लिश नॉवल गेट्स इज फ्रॉम द ट्रिनिटी ऑफ मुल्क राज आनंद, आर के नारायण और राजा राव। इनके बारे में हम आगे देखेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। द फर्स्ट इंडियन इंग्लिश नॉवल बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सबसे पहली जो इंग्लिश नॉवल है वो लिखी, राजमोहन वाइफ। इट वाज सीरियलाइज्ड एज वाइफ इन द कैलकाटा वीकली। तो जो नॉवेल्स हैं, सिर्फ राजमोहन वाइफ नहीं, इस टाइम पे चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल्स या फिर वॉल्टर स्कॉट के भी नॉवेल्स जिनसे बंकिम चंद्र इंस्पायर्ड थे, राइट, इन्फ्लुएंस थे, इनके भी नॉवेल्स ऐसे वीकली में आते थे। कैसे? जैसे आज का अखबार है तो इसमें एक चैप्टर आएगा, अगले हफ्ते फिर से एक और चैप्टर आएगा।
सो इट इज लाइक अ सीरियल दैट यू वॉच, राइट, वीकली सीरियल। उस तरीके से ये नॉवल पब्लिश हुई। राजमोहन वाइफ सीरियलाइज हुई कैलकाटा वीकली में 1864, राइट। बुक फॉर्म में सबसे पहली बार ये पब्लिश हुई 1930s में जाके। उससे पहले ये 1864 में ये कैलकाटा वीकली में आ रही थी। इन्फ्लुएंस्ड बाय, यस, बंकिम चंद्र वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय वॉल्टर स्कॉट, चार्ल्स डिकेंस। और अगर आप वॉल्टर स्कॉट और चार्ल्स डिकेंस को देखेंगे तो दे वर राइटिंग सोशल नॉवल, राइट। द सोशल नॉवल वाज कमिंग इन, सोशल इश्यूज पे बात हो रही थी अपने नॉवेल्स में। और कहीं ना कहीं राजमोहन वाइफ, विच इज ऑल्सो, ये जो वाइफ है, राजमोहन वाइफ इज टॉकिंग अबाउट हर वॉइस, राइट, इज टॉकिंग, वी आर सीइंग हाउ शी इज बीइंग ऑप्रेस्ड। एक राजमोहन की जो बीवी है, उनकी उनकी वॉइस, मतलब व्हाट इज हर ओन वॉइस, दैट वी आर सीइंग इन द narrative, right? So it is the sufferings of a middle class housewife, मातंगिनी नाम है उनका, at the hands of her husband राजमोहन, रूरल ईस्ट बंगाल में, राइट। यह है सब्जेक्ट नॉवल का। तो आप समझ रहे हैं कि सबसे पहला जो इंडियन इंग्लिश नॉवल था, ये भी एक सोशल नॉवल था, राइट। सोशल इश्यूज पे बात हो रही थी यहाँ। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो नाउ व्हेन वी नो द फर्स्ट इंडियन इंग्लिश नॉवल, ये आई 1864 में, और ये उस टाइम पे पब्लिश नहीं हुई एज अ बुक। एज अ बुक ये जाके पब्लिश हुई इन द ईयर 1930, इन 1930s में जाके ये पब्लिश हुई, राइट। तो in between this we do not really have much work in the novel. पोएट्री लिखी जा रही थी, रविंद्रनाथ टैगोर भी लिख रहे थे, औरोबिंदो भी लिख रहे थे, सरोजिनी नायडू भी लिख रही थी, तो पोएट्री लिखी जा रही थी, और पोएट्री के बारे में हम अगले ब्लॉक में पढ़ेंगे। लेकिन जो नॉवल है, ये नॉवल, पहली नॉवल आने के बाद नॉवेल्स नहीं लिखे जा रहे थे बहुत ज्यादा। तो जो मेन नॉवेल्स आए इंडियन इंग्लिश में, दूसरी भाषाओं में नॉवेल्स आ रहे थे, मेक नो मिस्टेक, राइट, बी क्लियर, दूसरी भाषाओं में नॉवेल्स आ रहे थे। इंडियन इंग्लिश में बंकिम चंद्र ने भी जब पहली नॉवेल अपनी लिखी इंग्लिश में, राजमोहन वाइफ, उसके बाद उन्होंने अपनी सारी नॉवेल्स बंगाली में लिखी। उसके बाद उन्होंने इंग्लिश छोड़ दी, राइट। लेकिन उसके बाद जो इंडियन इंग्लिश को तीन राइटर्स ने पकड़ा, दे इन्फ्लुएंस्ड एंड दे मेड इट रिच विद द टाइम। हु वर दे? दे वर मुल्क राज आनंद, आर के नारायण और राजा राव। इनमें से आर के नारायण के बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा, मालगुडी काफी फेमस है, और उनकी एक कहानी हम इन दिस कोर्स वी आर आल्सो गोइंग टू रीड, राइट, इस ब्लॉक में ही पढ़ने वाले हैं। और हम बाकी दोनों के बारे में भी थोड़ा जानेंगे। तो इसमें सबसे राइट में जो है इस पिक्चर में, सबसे राइट में मुल्कराज आनंद है, सबसे लेफ्ट में आर के नारायण है इन हिज स्पेक्टिकल्स, एंड इन द मिडिल वी हैव राजा राव, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो मुल्कराज आनंद, सो इन मुल्कराज आनंद वी सी द सोशल कमिटमेंट, राइट, जहां हम देखते हैं कि हिज कैरेक्टर्स, मुन्नू के बारे में, एक कूली के बारे में लिख रहे हैं। बखा जो है ये एक अनटचेबल है, राइट, बखा इन अनटचेबल, इंडेंचर्ड लेबरर गंगू। तो इधर ये सारे एक तरीके से दे आर विक्टिम्स ऑफ क्रूएल्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि जो कैरेक्टर्स पिक किए जा रहे हैं, हम राजा महाराजाओं के बारे में कहानी नहीं देख रहे हैं, हम द कहानी, द स्टोरी दैट वी आर सीइंग इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ समवन हु इज बीइंग ऑप्रेस्ड, समवन हु डज नॉट रियली हैव अ वॉइस, राइट। और सोशल चीजों के बारे में, जैसे अनटचेबिलिटी एक सोशल इशू है, जो यूज ऑफ लेट्स से लेबर, लेबर को कैसे देखा जाएगा, लेबरर्स मूवमेंट, दैट इज ऑल्सो अ सोशल एलिमेंट, राइट। और इन चीजों के बारे में लिखा जा रहा था, मुल्खराज आनंद इन चीजों के बारे में लिख रहे थे। He is receptive to the thoughts of a number of Western thinkers of his time, right? आप अगर डायरेक्टली देखेंगे तो इन सारे एलिमेंट्स में आपको एक मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी देखने को मिलेगी, आपको दूसरे मतलब काफी लिबरल आइडियोलॉजीज जो थे उनका एक portrayal मिलेगा in Mulk Raj Anand, right? So you'll see this. They portray the grim working conditions of the people and become a true picture of contemporary India, right? तो जो बुरे वर्किंग कंडीशंस हैं, उनको काफी
अच्छे से शो करते हैं और जो कंटेम्प्रेरी इंडिया का एक पिक्चर है वो बनाते हैं, राइट? दे ड्रॉ दैट पिक्चर. लेट्स मूव फॉरवर्ड. These are some of the important works of Mulk Raj Anand. Untouchable is a very famous novel and his first novel. इन तीनों में से 1935 में सबसे पहले मुल्कराज आनंद की किताब आई थी, फिर 1936 में आई गेस आर के नारायण की स्वामी एंड सन्स आई थी, और 1937 में राजा राव की पहली किताब जो है कांतापुरा. कांतापुरा सबसे पहले 1937 1938 के आसपास आई थी, राइट? सो दिस इज ऑल्सो द क्रोनोलॉजी. अनटचेबल लिखी गई 1935 में, जो बखा के बारे में है. कूली 1936, जिसमें देर इज द कूली दैट वी सॉ, राइट? टू लीव्स एंड अ बड, ड्रामेटिक नॉवल है ये, सेट इन द प्लांटेशंस ऑफ असम. असम के प्लांटेशंस में सेट है. He wrote The Village, Across the Black Waters, The Sword and the Sickle. The Sword and the Sickle, जो इमेज है वही कम्युनिज्म का इमेज है, स्वॉर्ड और सिकल. तो the imagery is of that private life of an Indian prince, right? Again, showing, let's say, the Indian prince in a different light. So this is what Mulk Raj Anand is working with. Right? These are some of his important works. You don't need to remember all of them. I'm again telling you. But जब आप एक ये देख रहे हो तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि एक राइटर का ऊव्र जिसको हम कहते हैं कि क्या क्या उन्होंने लिखा है. Right, let's move forward. And there are many slides here because I have mentioned all plenty of writers and most of their important works, right? So we'll be moving a little fast. So wherever you feel like you want to stop and watch something, you can just stop and watch a little bit and then move the video along, right? So let's move on. आर के नारायण हमारे नेक्स्ट नॉवलिस्ट. आर के नारायण के बारे में हम काफी ज्यादा जानेंगे अगले ही यूनिट में. आर के नारायण के लाइफ और वर्क्स के बारे में बात करेंगे हम. अभी के लिए अब बस इतना जानिए कि एक ए पॉलिटिकल नॉवलिस्ट कहा जाता था उनको, क्योंकि उनकी नॉवेल्स में जैसे मुल्क राज आनंद सीधे तरीके से एक पॉलिटिकल स्टांस लेंगे, आर के नारायण ऐसा कुछ नहीं करेंगे. आर के नारायण ए पॉलिटिकल तरीके से एक कहानी बताएंगे आपको, जिस कहानी को आप सुन के आप एक तरीके से मजा लेंगे उस कहानी का, आप ज्यादा सोचेंगे नहीं उस कहानी के दौरान. लेकिन वो अलग बात है कि इफ यू वांट टू थिंक अबाउट इट, देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स टू थिंक अबाउट ऑल्सो. ही लाइक टू कैप्चर लाइफ इन इट्स रिचनेस एंड वैरायटी, राइट? जो रिचनेस है लाइफ की उसको कैप्चर करते थे. देर इज अ ब्लेंड ऑफ जेंटल आयरनी एंड फेलो फीलिंग. अगर आप पढ़ेंगे, जैसे अगर आप अ टाइगर इन मालगुडी पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि जेंटल आयरनी जैसी इंडियननेस में हम यूज करते हैं इन जनरल, एक जेंटल आयरनी के साथ, एक हास्यकार, एक मौकरी के साथ, जैसे हम अपने दोस्तों से या फिर किसी अ, नजदीकी इंसान से बात करते हैं, उसी तरीके से आर के नारायण लिखते भी हैं. तो एक जो फेलो फीलिंग है वो रह जाती है. सिंपल कंसील कॉम्प्लेक्सिटी, सीमिंगली सिंपल कंसील कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कि आपको पढ़ते हुए काफी सिंपल लगेगा, लेकिन अगर आप इसके बारे में सोचने लगेंगे, डायरेक्ट कोई पॉलिटिकल स्टांस भी नहीं नजर आएगा आपको. लेकिन अगर आप इसके बारे में सोचेंगे तो आपको काफी सारी चीजें, काफी सारी एलिमेंट्स जो हैं आर के नारायण की, वो बाहर आएंगी. एंड मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स आर सेट इन द फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी. मालगुडी जो है, इसके बारे में आर के नारायण ने बताया भी है कि ये कंप्लीटली फिक्शनल है, लेकिन इसके एलिमेंट्स आर के नारायण ने साउथ इंडियन किसी स्मॉल टाउन से लिए हैं जहाँ पे लाइफ काफी स्लो है, राइट? तो उस तरीके से आर के नारायण ने ये किया है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. दीज आर सम ऑफ हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स. अगर आप यहाँ पे देखेंगे, स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935 1936 में आई थी ये, अनटचेबल के जस्ट बाद बाद. वेंडर ऑफ स्वीट्स, ये भी मालगुडी बेस्ड है. द डार्क रूम, द इंग्लिश टीचर, ये भी मालगुडी बेस्ड है ये. वेटिंग फॉर द महात्मा, गांधीयन नॉवेल्स जो होती हैं इस टाइम की, उनमें आती है कि इसमें महात्मा गांधी खुद भी आते हैं, राइट? 1955 में ये इट वाज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ महात्मा गांधी. सो दिस इज ऑल्सो देयर. वेटिंग फॉर द महात्मा में गांधी जी खुद आते हैं, एंड इट इज सेट इन द फ्रीडम स्ट्रगल.
फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम में है सेट, और ये खत्म होती है बाय द डेथ ऑफ द महात्मा, राइट? सो इट हैज डिफरेंट इम्प्लीकेशंस. द मैन ईटर ऑफ मालगुडी इज अनदर. A tiger for Malgudi, इसको हम पढ़ेंगे, right? We have this in our course. The last that he wrote was The World of Nagaraj, right? And he died in 2001. Let's move forward. Raja Rao, he was born in 1908. Uh, इनकी पढ़ाई मैसूर, मद्रास और यूरोप तीनों जगह हुई. Raja Rao में you will see the mythic influence, right? I have stated all the different things here. कांथापुरा जो है इनकी पहली नॉवल, कांथापुरा ब्रिंग्स आउट द इम्पैक्ट ऑफ गांधी. ये भी एक गांधीयन नॉवल है अगेन. एंड हिज आइडियाज ऑन अ स्मॉल मैसूर विलेज. मैसूर के एक विलेज में सेट है ये. जो नैरेटर है वो एक ओल्ड वुमन है इधर, जो कांतापुरा की बात बताती है यहाँ, राइट? कांतापुरा का जो फॉरवर्ड है, जो प्रीफेस है, वो काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट टॉक्स अबाउट द इंडियन इंग्लिश नॉवल. इट टॉक्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ माइथोलॉजी, कि कैसे आप अगर नोटिस करेंगे इन इंडिया, एवरी प्लेस, एवरी टाउन हैज सम मिथिक इम्पोर्टेंस. जैसे माइथोलॉजी में इस टाउन में लेट्स से रामायण में ऐसा कुछ हुआ था, या फिर अगर आप देखें कि टाउन का अपना एक मिथ होता है कि इस टाउन में जब ये या फिर ये कोई राजा आए थे तो वो यहाँ आके यहाँ पे उन्होंने कुछ किया था, या फिर इस गॉड ने यहाँ पे कुछ किया था. सो एवरी टाउन हैज अ मिथ. इन दैट वे देयर इज अ माइथोलॉजी ऑफ एवरी टाउन. एंड इन द प्रेफेस ऑफ कांथापुरा, राजा राव says that this is kind of an essence of Indian English writing also, right? He mentions that in this, so you can read. It is only a page or two. तो कांतापुरा में द नैरेटर इज एन ओल्ड वुमन एंड शी टेल्स द स्टोरी विथ मेनी डाइग्रेशंस. डाइग्रेशंस मतलब क्या? मेन पॉइंट से हटके इधर उधर बात लेके जाके शी टेल्स द स्टोरी इन डिफरेंट, विद डिफरेंट डाइग्रेशंस. शी यूज डिफरेंट एलिमेंट्स, डिस्क्रिप्शन यूज करती हैं, रिलीजियस डिस्कोर्सेस को लेके आती हैं, पोइट्री यूज होती है, फोकलोर भी यूज होता है, हिस्ट्री, लेजेंड, माइथोलॉजी सब यूज होता है in the making of कांतापुर, right? So it is a text of that standard. Let's move forward and look at his works. So these are some of his important works. कांतापुरा जो इनकी सबसे पहली नॉवल थी, Serpent and the Rope, right? Again, a different kind of a novel. आप राजा राव के नॉवेल्स में एक फिलोसॉफिकल एंडेवर भी देख सकते हैं कि जहाँ पे देर इज एन अटेम्प्ट टू थिंक अबाउट थिंग्स इन अ फिलोसॉफिकल वे, राइट? कैट एंड द शेक्सपियर में भी काफी एक फिलोसॉफिकल डिस्कशन, एक सिंपल से नैरेटिव को लेके एक फिलोसॉफिकल डिस्कशन जो करना, दिस यू कैन सी. कॉमरेड किलर, साउथ इंडियन ब्राह्मण्स व्यूज ऑन कम्युनिज्म को देखते हैं. द ब्रिटिश वॉर, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. राजा राव खुद was a Brahmin, right? He was an upper caste guy. So he was perceiving of the world in his own understanding. That The Chess Master and His Moves is another novel where he uses the metaphor of the chess game to animate philosophical ideas, right? चेस गेम के मेटाफर को यूज करते हैं फिलोसॉफिकल आइडियाज के बारे में बात करने के लिए. तो राजा राव में आपको एक फिलोसॉफिकल जो साइड है वो देखने को मिलेगा. लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो दिस इज फॉर यू. नेम द थ्री सिग्निफिकेंट नॉवेलिस्ट्स. आई एम श्योर यू कैन डू दिस. व्हाट आर द वेरियस थीम्स जो मुल्कराज आनंद अपने नॉवेल्स में डील करते हैं? कैसे थीम्स है उनके नॉवेल्स में? वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस. What does मालगुडी imply in आर.के. नारायण's novels and stories, right? मालगुडी क्या imply करती है? अब आप जब ये क्वेश्चन आप देखते हैं तो आप मालगुडी के बारे में ऐसे सोचिए कि एक फिक्शनल टाउन जो एक तरीके से यूटोपियन आप कह सकते हैं, इन द सेंस कि मालगुडी में कभी कुछ बहुत बुरा, बहुत ज्यादा बुरा नहीं होता. द पीपल आर नॉट वेरी बैड. द पीपल आर general, साफ दिल इंसान. इन अ वे इट इज एन इडिलिक टाउन, राइट? सो इन दैट सेंस यू कैन थिंक अबाउट मालगुडी. और इस मालगुडी के बारे में हम और भी बात करेंगे इन द कमिंग लेक्चर्स, राइट? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब पोस्ट इंडिपेंडेंस नॉवेलिस्ट पे हम आ गए. भवानी भट्टाचार्य, इन्होंने अपनी पहली नॉवल लिखी 1947 में जो आई, सो मेनी हंगर्स, राइट? इट इज अ फेमस नॉवल.
और जो इनके काम है, म्यूजिक फॉर मोहिनी, ही हु राइड्स अ टाइगर 1952, दिस इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ हिज फाइनेस्ट वर्क्स। इसको हम स्कूल्स में और स्कूल के सिलेबस में इसकी हम एक छोटी कहानी भी पढ़ते हैं जनरली, राइट? बिलीव्स अगेन, ही बिलीव्स इन द नॉवल विद अ सोशल पर्पस। तो भवानी भट्टाचार्य जब नॉवेल्स लिख रहे हैं, अगेन जैसे हमने मुल्कराज आनंद के टाइम पे देखा था, नॉवेल्स में एक सोशल पर्पस है, राइट? कोई भी सोशल इशू को क्रिटिक करना या फिर कोई एक सोशल इशू के बारे में बात करना इज द मेन पॉइंट ऑफ द नॉवल। और जो नॉवेल्स इन्होंने लिखी, अ गॉड इज नेम्ड गोल्ड, शैडो फ्रॉम लद्दाख 1966 में, और 1978 में अ ड्रीम इन हवाई, राइट? His most important and his finest work is considered to be He Who Rides a Tiger. Let's move forward. मनोहर मालगोनकर। मनोहर मालगोनकर खुद एक आर्मी ऑफिसर थे, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, राइट? ही हैज ही हैज रोट द एस्पियोनाज नॉवल, मतलब जो स्पाई नॉवेल्स होती हैं, स्पाई इन एम्बर, कॉम्बैट ऑफ शैडोज, ये दोनों ही स्पाई नॉवेल्स। डिस्टेंट ड्रम इन्होंने लिखी, इनकी सबसे पहली नॉवल, राइट? डिस्टेंट ड्रम। तो इसमें ड्रम का जो साउंड है, इट रेजोनेट्स विद आर्मी सेटिंग। बैंडिकूट रन, ये दोनों ही आर्मी सेटिंग में बेस्ड हैं। और आर्मी सेटिंग के बारे में ऑब्वियसली मालगोनकर ज्यादा जानते भी थे, क्योंकि ही वॉज अ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। द प्रिंसेस 63 में जो आई, अबाउट द प्रिंसली स्टेट्स बिकमिंग अ पार्ट ऑफ इंडिया। नाउ यू मस्ट नो कि इंडिया 1947 में ही इंडिपेंडेंट जरूर हो गया था, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स थे, लेट्स से हैदराबाद, कश्मीर, राइट, देयर वर मेनी अदर, मैसूर, so all of these princely states, they did not have, ये डायरेक्टली इंडिया का पार्ट नहीं हुए थे। क्योंकि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई थी, तो इनको भी एक तरीके से इंडिपेंडेंस मिल गई थी। एंड इट वाज द जॉब ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड आवर सरदार पटेल एट दैट टाइम टू गेट ऑल ऑफ दीज स्मॉल यूनियंस, स्मॉल प्रिंसली स्टेट्स टुगेदर, राइट? तो ये जो द प्रिंसेस है 1963 में, मनोहर मालगोनकर इस चीज की बात कर रहे हैं इन दिस। अ बेंड इन द गैंजेस इज अ पार्टीशन नॉवल। तो अगर आप पार्टीशन लिटरेचर की तरफ जाना चाहते हैं, अगर आप पार्टीशन के बारे में और जानना चाहते हैं, तो ये अ बेंड इन द गैंजेस आप पढ़िए। ये पार्टीशन के बारे में लिखी हुई है, फिक्शनल अकाउंट है, लेकिन इट इज अबाउट द पार्टीशन। द डेविल्स विन इज एन अटेम्प्ट टू पोर्ट्रे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, 1857 में जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, जिसको इंग्लैंड में सिपाही म्यूटिनी के नाम से भी जाना जाता है। डेविल्स विन टॉक्स अबाउट दैट। In Cactus Country talks about the 1971 war from the perspective of Pakistani officer. पाकिस्तानी ऑफिसर के पर्सपेक्टिव से 1970 वॉर 1971 वॉर की बात करते हैं। तो मनोहर मालगोनकर इस तरीके से इंपॉर्टेंट है, और कुछ काम जो है, कुछ वर्क्स जो है, आप इधर देखिए, और उनके बारे में कुछ आपको अगर इंटरेस्टिंग लगता है, आप सीधा पढ़ सकते हैं। अ बेंड इन द गैंजेस इज अ फेमस नॉवल बाय हिम। इट इज प्रिस्क्राइब्ड ऑल्सो समटाइम्स। लेट्स मूव फॉरवर्ड। खुशवंत सिंह, इनका नाम आपने अगर पार्टीशन लिटरेचर के बारे में थोड़ा भी कुछ आप जानते हैं, तो आपने इनका नाम सुना होगा जरूर, राइट? और अ ट्रेन टू पाकिस्तान इज अ वेरी फेमस टेक्स्ट एंड इज अ वेरी लव्ड टेक्स्ट। पार्टीशन नॉवल है, इसमें मनो माजरा इज द प्लेस दैट इज सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान, राइट? मनो माजरा करके ये जगह है। और इट इज अ माइक्रोकॉस्म ऑफ द कम्युनल टेम्पर ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द डेज ऑफ पार्टीशन। तो अगर आप पार्टीशन के टाइम पे देखेंगे, तो जो पूरे कंट्री का जो टेम्पर था, एक तरीके से माइक्रोकॉस्म का मतलब होता है एक छोटे एरिया में पूरा सारे जो एलिमेंट्स है, या फिर सारे जो इमोशंस हैं ऑफ अ बिगर प्लेस इज देयर, ऑल द कल्चरल एलिमेंट्स आर देयर। सो इट इज अ माइक्रोकॉस्म ऑफ द कम्युनल टेम्पर ऑफ द कंट्री। पूरे कंट्री का जो कम्युनल टेम्पर था उस टाइम पे, उसका एक माइक्रोकॉस्म बनता है मनो माजरा। द नॉवल टॉक्स अबाउट द कम्युनल मैसेकर्स। 1947 में पार्टीशन के समय पे जो कम्युनल मैसेकर्स हुए, उसके बारे में ये नॉवल बात करती है। एक और नॉवल जो इन्होंने लिखी है, वो है हिस्ट्री ऑफ द सिक्स, राइट? नॉवल कम डॉक्यूमेंटेड फिक्शन, डॉक्यूमेंटेड वर्क अकाउंट इन अ वे। सो दिस इज खुशवंत सिंह। लेट्स मूव फॉरवर्ड। जीवी देसानी, यूरोप में
जो अब्सर्डिस्ट और एग्जिस्टेंशियलिस्ट मूवमेंट जो हुई थी, हम दो ऑथर्स देखेंगे यहाँ पे जिन्होंने उस मूवमेंट को या फिर उससे इंस्पायर्ड नॉवेल्स इंडिया में इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर लिखे। तो ऑल अबाउट एच हैटर इज वन ऑफ दोज नॉवेल्स। अगर आपको एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफी में इंटरेस्ट है तो आप जीवी दसानी को कैन यू कैन सी हिम फ्रॉम इन द मैनर ऑफ एन एक्सटेंशन टू दैट। कामों के जो अब्सर्डिस्ट फिलोसफी से एक्सटेंशन होके ऑल अबाउट एच हैटर इज द जर्नी ऑफ वन पर्सन, राइट। आप जेम्स जॉयस की तरह भी देख सकते हैं, यूलिसिस की तरह भी देख सकते हैं। ऑल्सो नोन एज द मास्टर ऑफ द अब्सर्ड, जीवी देसानी इज ऑल्सो नोन एज द मास्टर ऑफ द अब्सर्ड। अरुण जोशी कम्स अ लिटिल लेटर, लेकिन जो इनके नॉवेल्स हैं दे आर ऑन द स्ट्रेन इन द स्ट्रेन ऑफ जीवी देसानी। द फॉरेनर, द स्ट्रेंज केस ऑफ बिली बिस्वास इज अ वेरी फेमस नॉवल, द स्ट्रेंज केस ऑफ बिली बिस्वास. This is influenced by the likes of Albert Camus, right? So, what are the themes? Portraying the aimless existence of man, existentialist philosophy again, and the problems of East and West encounter in post-independent India, right? इस चीज को भी पोर्ट्रे करते हैं, ईस्ट और वेस्ट एनकाउंटर से क्या हो रहा है इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया. सो दिस इज ऑल्सो देयर. लेट्स मूव फॉरवर्ड. चमन नहाल, अगेन अनदर इम्पोर्टेंट राइटर, जिन्होंने आजादी 1975 में लिखी. इट इज अनदर पार्टीशन नॉवल and it won the Sahitya Academy Award. Now, Sahitya Academy Award is the greatest award in India, is the most acclaimed award for fiction in India, literature in India. So, ये इनको मिला for Azadi, and it is his most famous and the only main known text, Azadi. It is a partition novel. With this, we come to Salman Rushdie. Now, Salman Rushdie के बाद से पोस्ट इंडिपेंडेंस नॉवलिस्ट्स में भी एक अलग ट्रांजिशन स्टार्ट हुआ, जहां पे वी सी दैट द लैंग्वेज इसके पहले एक तरीके से जैसे मीनाक्षी मुखर्जी उनकी एक टेक्स्ट में वो बात करती हैं कि इंडियन इंग्लिश फिक्शन किस तरीके से हिस्टोरिकल हुआ करता था, सोशल हुआ करता था, और एक तरीके से थिंकिंग हुआ करता था, लाइक एग्जिस्टेंशियल, या फिर इट यूज टू क्वेश्चन दैट ईस्ट वेस्ट एनकाउंटर से क्वेश्चन किया जाता था. सलमान रश्दी ब्रॉट sort of an independence in the Indian English use, right? And he started using magic realism, राइट. मैजिक रियलिज्म का यूज हम मिडनाइट्स चिल्ड्रन में भी देखते हैं और भी नॉवेल्स में हमको दिखता है इनके, राइट. तो इन दैट he tried to move into another era in Indian English literature. Indian English is becoming independent of its colonial roots in a way where it is acknowledging, right? वो acknowledge करके एक जो टेक्निकल चेंज लाया जा रहा है इन राइटिंग बाय द यूज ऑफ मैजिक रियलिज्म, राइट. तो वो मैजिक रियलिज्म का यूज जो इंडियन मिथिक एग्जिस्टेंस है या फिर इंडियन लेट्स से द वांट टू गेट ओवर द कॉलोनाइजर्स comes in through Midnight's Children and comes in through the use of magic realism, right? It is a technique in that sense. तो इनकी पहली नॉवल थी ग्रिमस. ग्रिमस वाज नॉट वेरी फेमस, राइट. मिडनाइट्स चिल्ड्रन बिकेम वेरी फेमस. इट वन द बुकर प्राइज 1991 में, बुकर ऑफ बुकर प्राइज इन 1993, राइट. इट कवर्स 1910 टू इमरजेंसी के टाइम तक, 1975 तक, और इसके जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो है सलीम सिनाई. सलीम सिनाई प्रोटैगनिस्ट है एंड ही हैज सम मैजिकल पावर्स एंड इन दैट सेंस. और इन्होंने लिखा है शेम, सेटानिक वर्सेस. सेटानिक वर्सेस की वजह से इनको सलमान रश्दी के अगेंस्ट एक फतवा रिलीज हुआ था, राइट, which demands the killing of Salman Rushdie essentially. The Moor's Last Sigh, The Ground Beneath Her Feet, Shalimar the Clown, The Golden House is a very recent novel. So these are Salman Rushdie's works. You need to remember Midnight's Children, और आप Satanic Verses को भी याद रख सकते हैं. Grimace rather is his first novel, right? He uses magic realism.
Let's move forward. Boman Desai is another writer of this time. Memory of the Elephants इन्होंने लिखी. Tautological in nature, right? जो protagonist है होमी सिरवाई is a Parsi scientist from Bombay. Right, he invents the machine that can scan brain for memories of good times. तो एक तरीके से साइंस फिक्शन जो है वो भी आ रहा था. दिस मशीन गोज रॉन्ग एक्सपीरियंसेस रेशियल एंड एंसेस्ट्रल मेमोरीज. तो एक तरीके से साइंस फिक्शन को यूज करके कैसे रेशियल और एंसेस्ट्रल मेमोरीज को इवोक किया जा रहा है या फिर उन थीम्स को लेके आया जा रहा है. इट टॉक्स अबाउट दैट इन मेमोरी ऑफ एलिफेंट्स. राइट. हिज अदर वर्क्स आर असाइलम, यूएसए एंड अ वुमन मैडली इन लव. लेट्स मूव फॉरवर्ड. शशि थरूर, इनको आप जानते होंगे. ये हमारे एमपी हैं अभी in the parliament, right? He was born in 1956, and he wrote the great Indian novel, which weaves a satirical story of Indian life, drawing ideas by going back and forth in time. So it uses many different mythical structures of Indian language also, and it goes back and forth in time, right? So that also happens in the great Indian novel. रोहिंटन मिस्त्री के बारे में भी हम पढ़ेंगे. इनके शॉर्ट स्टोरीज कुछ हम पढ़ेंगे यहाँ पे in as a part of this course, right? He shifted to Canada in 1975. He wrote something like Such a Long Journey. तो डायस्पोरा राइटर्स जो होते हैं वो रोहिंटन मिस्त्री उनमें पढ़ जाते हैं. डायस्पोरा मतलब जो फर्स्ट जनरेशन डायस्पोरा जो इंडिया से मूव हुए हैं अब्रॉड और जाके वहां से लिख रहे हैं. तो उनका जो फिक्शन है वो इंडियन राइटिंग्स में ही पढ़ता है, बट इंडियन डायस्पोरा राइटिंग्स में पढ़ता है. सलमान रश्दी ऑल्सो डज नॉट लिव इन इंडिया. He went on to Britain and then he's living currently in America. Right. So he shifted to Canada in 1975. Such a Long Journey 1991 में इन्होंने लिखी. Set in Mumbai in 1971 during the time of the India-Pakistan War. Right. Another novel we saw Indian 1971 की by Manohar Malgonkar. The city was engulfed by globalization on one hand and illiteracy, unemployment, exploitation. तो एक तरीके से जो दोनों वर्ल्ड्स हैं, राइट, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड और दूसरे ही तरफ अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, एवरीथिंग. सो ही कवर्स ऑल ऑफ दैट. Two of his other major works are A Fine Balance and Family Matters. In his novels, you find a poignant picture of the Parsi community. Rohinton Mistry, क्योंकि वो खुद पारसी हैं, you see Parsi community struggling in pursuit of an identity. You should know that Parsi community जो है, जो they moved from the Middle East to India very early, right? And thus there is this movement which is at the core of their identity, and there is a pursuit of an identity in this way. राइट. जोरोस्ट्रियंस भी कहा जाता है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. Amitabh Ghosh is another famous Indian writer, right? He has recently published a book. I guess it is called Smoke and Waters or something of the sort, right? जो काफी recently आई है. Uh, some of his major works, Shadow Lines. The Shadow Lines is a very famous text. Universities में ये पढ़ाया भी जाता है. It weaves together personal lives और public events. इंडिया, इंग्लैंड और बांग्लादेश के बारे में बात करता है ये. सेट बिटवीन 52 और 79. इसके बीच में जो पाकिस्तान और बांग्लादेश वॉर वो भी हुआ था जिसमें बांग्लादेश बिकेम इंडिपेंडेंट, राइट? सो दैट आल्सो हैपेंड. Some of his other famous novels are The Circle of Reason, Calcutta Chromosome, The Glass Palace, Hungry Tide. So Hungry Tide में जैसे वो environmental factors की भी बात करते हैं, right? So there are many different factors that Amitav Ghosh takes up in his novels. Let's move forward. उपमन्यु चटर्जी, सिविल सर्विसेज खुद इन्होंने पास की है 1983 में. इंग्लिश ऑगस्ट टॉक्स अबाउट एक लड़का अगस्त्य जिसने सिविल सर्वेंट जो अभी बना है, पोस्टेड इन मादना. तो ये जो एक अर्बन और स्मॉल टाउन क्लैश है ये देखने को मिलता है. और कहीं ना कहीं वी सी अगस्त्य कॉन्स्टेंटली रीडिंग meditations by Marcus Aurelius, right? एक वेस्ट और ईस्ट एनकाउंटर भी थ्रू अर्बन और टाउन, स्मॉल टाउन एनकाउंटर हमको देखने को मिलता है. और इसी का जो सीक्वल है वो है द मेमोरीज ऑफ द वेलफेयर स्टेट. Another novel that he has written is The Last Burden.
Right, let's move forward. Vikram Seth is another important writer. इन्होंने लिखी है द गोल्डन गेट, बट हिज मोस्ट फेमस टेक्स्ट इज अ सूटेबल बॉय. इट इज अ वेरी बिग टेक्स्ट, राइट? काफी बड़ी नॉवल है. सेट इन द न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया 1950s में, और टॉर्न बिटवीन हम लता जो है इसमें, वो अपनी माँ की ख्वाहिशें और हर लव फॉर द मुस्लिम बॉय कबीर, इसके बीच में अटैच्ड हैं. और इट पोर्ट्रेज मेनी डिफरेंट थिंग्स, राइट? कम्युनल डिसहार्मनी है, करप्शन के बारे में बात करते हैं, परपेचुअल फाइट्स बिटवीन मॉडर्निटी और ट्रेडिशन, जो इंडिया में आज भी देखने को मिलता है, राइट? मॉडर्निटी और ट्रेडिशन के बीच में जो फाइट है, ये इंडिया में वी कैन सी टुडे ऑल्सो. एंड दिस fight is also seen in the suitable boy. Amit Chaudhary, another writer. I have mentioned most of his acclaims here. A Strange and Sublime Address. इनको बेटी टास्क प्राइज मिला, कॉमनवेल्थ प्राइज भी मिला 1991 में. आफ्टरनून राग इन्होंने लिखा. इनको सदर्न आर्ट लिटरेचर प्राइज मिला, ऑनकोर अवार्ड मिला फॉर बेस्ट सेकंड नॉवल ऑफ द ईयर. फ्रीडम सॉन्ग लिखा इन्होंने, वन द लॉस एंजलिस टाइम्स बुक प्राइज इन द ईयर 2000. और अ न्यू वर्ल्ड भी उन्होंने लिखा 2000. All the novels examine Calcutta life using characters of different ages, right? So Calcutta life को examine करते हैं ये सारे novels. और अगर आपको इसमें interest है, you can go along and read any of his novels. Let's move forward. आप यहाँ पे एक बार वीडियो पॉज करके you can check your progress. All of these questions you will find an answer. Which novelist writes on the Anglo-Indian community in his novel The Trotternama? This is interesting, right? And you can find this out. Where is the novel A Train to Pakistan set? Which awards were bagged by the novel Midnight's Children, right? And which novel of Khushwant Singh deals with partition? आपको इन सब के आंसर्स पता होंगे. अगर नहीं पता तो just pause this video, go back and find it out, and it will help you in your progress, right? Let's move forward. Now we come to the women novelists. Kamala Markandeya. She migrated to England at the age of 25. Bertrand Taylor के साथ इनकी शादी हो गई. Nectar in a Sieve is her most famous novel, जो रुक्मणी के बारे में बात करती है, द लव फॉर हर हस्बैंड नाथन, और इनका जो स्ट्रगल है ऑफ सर्वाइवल, राइट? इनको छोड़ के काफी सारे नॉवेल्स हैं. अ साइलेंस ऑफ डिजायर, पोजेशन, अ हैंडफुल ऑफ राइस, द प्लेजर सिटी. देयर आर मेनी नॉवेल्स रिटन. नेक्टर इन अ सीव इज वन ऑफ हर मोस्ट फेमस नॉवेल्स, राइट? कमला मार्कंडे. लेट्स मूव फॉरवर्ड. शशि देश पांडे की जो बाइंडिंग, द बाइंडिंग वाइन है, इसके बारे में हम और पढ़ेंगे. उस समय हम शशि देश पांडे के बारे में भी पढ़ेंगे. That Long Silence won the Sahitya Academy Award and is one of her most famous works. That Long Silence, right? The Dark Holds No Terrors is also another famous work of Shashi Deshpande. Let's move forward. रूथ प्रवार झाबवाला. रूथ प्रवार झाबवाला ये जर्मन ओरिजिन है, राइट? बॉर्न इन 1927, पॉलिश पेरेंट्स पे. She was married to Cyrus Jhabwala, right? And because she stayed in New Delhi, so we consider her in Indian literature only. And we see कैसे एक ओरिएंटल पर्सपेक्टिव हमको इनके नॉवेल्स में दिखता है. इफ यू टेक हीट एंड डस्ट, or if you take the householder, you will see that oriental point of view coming up, right? We'll talk more about the oriental perspective in the lectures coming up. Let's move forward. Nayantara Sehgal. Nayantara Sehgal was Jawaharlal Nehru's niece, right? She was Jawaharlal Nehru's niece, and she was connected to the Gandhi family in that way. She wrote Prison and the Chocolate Cake, A Time to Be, From Fear Set Free. स्टॉर्म इन चंडीगढ़ एक काफी वेल अक्लेम्ड नॉवल है इनकी. डिवीजन ऑफ पंजाब इनटू हरियाणा एंड पंजाब. तो आज हम जैसे देखते हैं कि हरियाणा और पंजाब अलग अलग हैं, तो ऐसा हमेशा से नहीं था. तो दिस डिवीजन शी टॉक्स अबाउट इट इन द स्टॉर्म इन चंडीगढ़. एंड यू मस्ट नो दैट चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ, right, Haryana also, and Chandigarh is again, so there is a dispute in there. The Day in Shadow is another one of her works.
Anita Desai, she has written many novels, as we can see. Fire on the Mountain is one of her famous works. National Academy Award of Letters Award उनको मिला था for this. Cry the Peacock is her first novel. Bye Bye Blackbird is another novel. Right. In Custody is another famous novel जिसको universities में पढ़ाया जाता है. Right. So there are these novels that are famous, and you can go through the other novels in the slide. Let's move forward. मंजू कपूर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती भी हैं. She wrote Difficult Daughters. It is the story about generations of daughters, begins with the third generation, and the story is seen through the eyes of Ida, who comes back to Punjab to reconstruct her mother's Virmati's past. तो ये कहानी है कहीं डिफिकल्ट डॉटर्स की. इट्स अ फेमस टेक्स्ट बाय मंजू कपूर. Finally, we come to Arundhati Roy. Arundhati Roy, The God of Small Things, was a major breakthrough for Arundhati Roy for Indian English literature. First Indian citizen to get the Booker Prize. Right? इससे पहले सलमान रश्दी को मिला है. But again, he was not an Indian citizen. वो इंडियन ओरिजिन से हैं लेकिन डायस्पोरा राइटर हैं. So she was the first Indian citizen to get the Booker Prize. This novel is set in Ayamanam, Kerala में. एस्था और राहेल की बात करते हैं और बात करते हैं कैसे फिर से एक तरीके से ईस्ट वेस्ट एनकाउंटर की बात होती है, कम्युनिज्म की बात होती है. इट टॉक्स अबाउट अनटचेबिलिटी, जहाँ पे जो इधर काम करते हैं, देयर इज अ लव अफेयर बिटवीन हर एंड एस्था एंड राहेल्स मदर. राइट. So these are some of the things that are being talked about in The God of Small Things. There is another novel, The Ministry of Utmost Happiness, that Arundhati Roy has written. It came out in 2017. Right. She has written other non-fictional works, but these are her major fictional works. Yes, so name some of the significant women novelists. I'm sure you can do that by now. Where is the novel The God of Small Things set? आप स्लाइड में पीछे जाइए और इसको देखिए. उस जगह के बारे में थोड़ा और देखिए if you want. Which novel by Anita Desai received the National Academy of Letters Award? I just talked about that. You can go and see. Right. So this was a brief view of the whole of Indian English novel. एक तरीके से मैंने कोशिश की कि मैं 50 मिनट में ये पूरा ट्रैक करूं. राइट. वी टॉक्ड अबाउट द मेजर नॉवलिस्ट्स. आपको ऑब्वियसली ये सारे नॉवेल्स के बारे में या फिर इन नॉवेल्स के नाम जानने की जरूरत नहीं है. व्हाट यू नीड टू नो, और ये एक आपको आइडिया देने के लिए है कि नॉवेलिस्ट्स कैसे आए इन इंडिया. राइट. और जो इंडियन इंग्लिश नॉवल है, इसका प्रोग्रेशन जो है वो कैसे हुआ. सो इट इज टू गिव यू एन आइडिया. सो कीप इट विद दैट. और अगर आप इसको एक दो बार देखेंगे तो आपको कुछ नॉवेलिस्ट्स के नाम भी याद रहेंगे और उन्होंने किस तरीके का काम किया है वो भी आपको थोड़ा बहुत पता chalega. Right. So on that note, this is the end of our first lecture of this unit, of this block rather, right, and of this course. We'll come back with the talk on R.K. Narayan, और जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे A Tiger in Malgudi. So I hope you will be reading A Tiger in Malgudi, क्योंकि अगर आप पढ़ते हैं उसके बाद मैं बात करता हूँ तो आपको इजीली समझ आएगा. And then we are going to talk and analyze about the novel. Right. So thank you. See you in the next lecture.